इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस वीडियो में हम देखेंगे कपलिंग क्या होता है, व्हाट इज कपलिंग, पर्पस ऑफ कपलिंग, एडवांटेज ऑफ कपलिंग एंड टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है व्हाट इज कपलिंग। कपलिंग इज a device that used to connect it two shaft, input shaft and another is output shaft. It is also called driving shaft and drive-in shaft together for purpose of power transmission. जनरली कपलिंग क्या होता है, दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और जिसका मेन पर्पस होता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे हमारे पास एक मोटर है और एक पंप है और दोनों को बीच दोनों का जो शाफ्ट है उसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में कपलिंग यूज़ करते हैं। पर्पस ऑफ कपलिंग, किस पर्पस में हम कपलिंग यूज़ करते हैं। नंबर वन, पावर ट्रांसमिशन, joining misalignment of shaft, reduce shock vibration to introduce protection against overload and easy to assemble and disassemble. This is the purpose of coupling. Advantage of coupling: to alter the vibration characters of rotating unit, to connect driving and driven parts, to introduce protection against overload, to provide for misalignment of the shaft, to introduce mechanical flexibility, to reduce the transmission of shock load shaft to another, to slip when overload occurs. This is the different types of advantage of coupling. Types of coupling: rigid coupling, flexible coupling and universal coupling. They are the main three types of coupling. This is the image of rigid coupling and this is the image of flexible coupling and there is the universal coupling. This is the three types of coupling. Thank you for watching. Subscribe, like and share this video.